महत्वपूर्ण रोल है। वजाहत फरूक जी का NGO सेव यूथ सेव फ्यूचर और बाकी सब यहाँ पे उपस्थित जुडिशरी के मेंबर्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स, एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे अभी। और अच्छा लगा मुझे कि आपसे मिलके बहुत सारे कश्मीर के वीमेन who are shining in their fields. Ladies and gentlemen, जब मैं आया था लास्ट ईयर तो इसी टाइम में तो मुझे कहा गया कि ये आज नवरोज़ का छुट्टी है। मैं वैसे नवरोज़ को मैं एक पारसी का एक फेस्टिवल समझता हूँ। उनका न्यू ईयर है, मैं जानता हूँ, मैं अपना बहुत दोस्त है बॉम्बे में। तो मैंने फ़ोन किया उसको, उनका नाम है जमशेद। अरे जमशेद जी, आपका छुट्टी है क्या? तो क्या बात है, आज कश्मीर में छुट्टी है, आइए मनाते हैं। मैंने पूछा, देन आई आस्क्ड कि इन कश्मीर में व्हाई इट इज नवरोज हॉलीडे? आई वॉज टोल्ड बाय माई रजिस्ट्री कि यहाँ पे चलता है हर साल, परहैप्स बिकॉज ऑफ इस्लामिक इन्फ्लुएंस शिया का। But I was not very convinced. There must be some other reason. I did a little bit of reading on why Navroz is celebrated. In fact, मैंने देखा कि ये this is a tradition. Actually, Navroz is a Persian. जो आप जानते हैं, before Islam came in Iran and these parts of that Persian empire, तो Zoroastrianism चलता था, and that was a very important festival. But at the same time, very interestingly, जो नवरोज जो फेस्टिवल है अभी भी ईरान में is celebrated in a much with fanfare. In fact, to the extent that the government takes it very seriously. It's a culture actually, not so much related with religion. And somehow this उस टाइम का जो इन्फ्लुएंस है, कल्चरल इन्फ्लुएंस हो, कश्मीर में भी आया हुआ लगता है. That's why I am told यहाँ पे नवरोज the Kashmiri Pandits also celebrate very. So they call this Navre in Kashmiri, perhaps Navre, which is a new day. And I am also told that these Kashmiri Pandits, they offer certain items on that day. जो Persians है, they used to offer some. Seen wherever I have been, the local people have been always welcoming. Yes, they are also people who are involved in tourism. They also want to make money. Taxi drivers हैं, hoteliers हैं, restaurant हैं, but they don't make you feel that you are an outsider. They always give you the feeling of, you see, hospitality. And this is, you can't make it artificial. You can't be very artificial. You can't be a good human being, you know, unless you are yourself very innately good. You can't pretend to be good. But goodness is something which comes out from within. Again, I said, this is because of the rich culture the place has, and full of potential. Kashmir can sign perhaps one of the best states in the country. We know the Gujarat, Rajasthan, Karnataka, Tamil Nadu, they are quite progressed in many fields, especially in the modern technology. Industrialization has taken place in many of these states. But Kashmir also has a potential, a huge potential, not only confined to tourism or apple industry or handicrafts.
It can, it has a, because I have seen last time when I visited the Kashmir University, I was very happy because we are talking a lot of women empowerment also. I think about out of about 70, about 30, 40 were girl students who were given this recognition. Gold medalists and others, achievers. Wonderful. It has a potential. But how do we realize that? It is not a very easy solution. As many speakers have spoken. Yes, giving इनका सम्मान करना, इज्जत देना, it's very important. First of all, that see, giving the dignity to women, it's very important. Then of course, when I was looking also the some figures, literacy figure में, especially women in the rural areas कम है. This is one challenge we have to impress upon. I am very happy to learn, as Mr. Sherpaji has just mentioned, that there is an increase in the number of students, girl students. Actually, see, men and women, they think differently. You will see that in recent election aa raha hai, you must have seen a lot of advertisement, kaise how trying to woo the electorates. But there is a concerted attempt to woo the women electorate. See, men generally cast their vote based on emotions. Hey, right, this, that, I don't want to go into it. All political issues and emotional issues. Women, they don't vote on that. It's how to make this life more comfortable, more practical, realistic. That's why every party, political party, is trying to woo the women voters in a different manner. Because they think differently, they're more realistic. They're emotional, but then when it comes to actual requirement of life, they're more practical. In fact, it is also one correlation. मैं देख रहा था कि what are the challenges now in Kashmir today faces as an outsider, as a judge. As mentioned, also crime against women is increasing. It's a very, very kind of disturbing trend. Recently, mostly, domestic violence increase हो रहा है. And there is a correlation with the drug issues also. आप जानते हैं, there are two centers of drug problems. एक तो golden triangle, एक है golden question. I come from Manipur, which is very near to golden triangle. Golden triangle है वहाँ पे Thailand, Laos, and perhaps Burma also. These are the three countries predominantly engaged in this drug, poppy cultivation and making of drugs. And वहाँ से सारे जाते हैं to the west. And Manipur is also one of the routes through which these drugs are exported to, taken, brought to many parts of the country as well as to other outside world. Because Manipur has a good connectivity. वहाँ से flights है, very frequently जाते हैं. So it's very easy and accessible place. And I have seen in 80s, Manipur was afflicted with this drug problem. Almost every household was affected. And that same, when I read these cases, यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ कोई भी about the drug issue, the same problem. एक drug addiction हो जाता है, फिर क्या होता है? He will initially ask money from their parents कि मामा पापा थोड़ा पैसे चाहिए, चाहे भाई खर्चा. Now parents would, as usual, oblige their children, 5 रुपया, 10 रुपया. लेकिन every day he will be asking, then बोलेगा पैसे नहीं है, जा. फिर क्या करेंगे? He will quietly go to and take out the money from his father's or mother's purse. एक शुरुआत होते हैं ऐसे करके. Then it is discovered, then the parents
they conceal their purse. Once they conceal their purse, then he'll take something from the home, sell it. तो एक इस तरह के एक हैबिट बन जाता है. It's difficult, and they clear the house actually before the parents realize कि क्या हुआ. Because he sold, because drug, see, it is costly. Initially they will give you free of cost. That's how it starts. सबको ये फ्रेंड सर्कल होते हैं, इनका लोकेलिटी होता है कि ले लो, अच्छा है, मज़ा आता है, ये अच्छी बात है. एंड they get hooked to it and they can't come out of it. Then they indulge in this घर का, अपना घर का चोरी करना. तो बाहर के लोग आके चोरी नहीं करते हैं, घर का खुद ही रहने वाले घर का सामान चोरी करते हैं. हम सोचते हैं कि चोरी, घर में चोरी हो गया, तो हम सोचते हैं कोई ना, वो आया था बाहर से, वो यू ऑलवेज कास्ट डाउट करते हो बाहर जो आता है. कि हम क्यों सोचते हैं कि आप घर का चीज़ घर वाले खुद कैसे चोरी करेंगे. बट दैट्स हाउ दिस होल फिनोमिनन स्टार्ट्स. देन तो खाने नहीं, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ बिगर डोज. देन दे यूज दिस इंजेक्शन बिकॉज मोर पावर इज रिक्वायर्ड. इंजेक्शन लगाते हैं. Then they share these injections. उससे क्या होता है? Then they transmit these other disease. So Manipur was at one point of time the highest kind of rate of say, HIV, because they do not use syringe use करते हैं. Addiction among women has also increased. But उनके again the stories are different. The root cause is क्या होता है? They become victim of domestic violence, of which so much things have been spoken also. They become a victim of domestic violence. To come out of it, some people again, there is a very increasing number of women who are addicted to this drug. There is a big challenge before the society. Now there is a relationship, because a man शादी कर लेता है, when he grows up also शादी कर लेता है, but then to tell the other girl side कि I am drug addict. Now once it's discovered, then क्या हुआ? Then this difference comes up. सेपरेशन हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है. एंड एक फॉर अ वुमन टू गेट डाइवोर्स बिकॉज ऑफ दिस ग्राउंड, इट्स अ शैटरिंग काइंड ऑफ लाइफ शैटरिंग एक्सपीरियंस. डिप्रेशन में चले जाते हैं. शी इज नॉट वेलकम इन द हाउस, शी इज नॉट वेलकम इन हर ओन हाउस. देन शी वांट्स टू एस्केप दिस प्रॉब्लम बाय गेटिंग दिस ड्रग. So these are some of these. I am not saying that this is the only way, but there are various reasons for it. But the fact remains that in today Kashmir is a big problem, because Kashmir is very near to this crescent, golden crescent, Afghanistan, Pakistan, and this Turkey. I think. What are the three? यहाँ पे चाइना, बांग्लादेश, यहाँ पे गोल्डन क्रेसेंट जो है ना, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है. म्यांमार तो गोल्डन ट्रायंगल हो गया ना, उस साइड में दूर है. तो ये जो है, बिकॉज इज वेरी नियर, पाकिस्तान से आता है. बिकॉज ये थोड़ी ऐसा होता है कि यार इंडिया से कोई गया, कश्मीरी कोई गया वहाँ पाकिस्तान में गया और अफगानिस्तान में गया ड्रग लाने, कोई नहीं जाता, वहाँ से लेके आता है. But we are also privy to it. We allow the drugs to be imported and we are ourselves distributing it. ये थोड़ी होगा कि यहाँ पे ड्रग जो वो सेल करे कोई अफगानिस्तान या पाकिस्तान या कोई चाइनीज हो, कोई नहीं होगा. ये हमारे खुद के मुल्क के आदमी है. It's a big challenge. If we cease to be that drug dealers, distributors ourselves, to a great extent we can. In fact today मैं देख रहा था मेरा हमारा वेबसाइट में, आज का दिन में 9,923 केसेस NDPS केसेस है. देखिए 9,000 से ऑलमोस्ट करीबन 10,000 केसेस है NDPS पेंडिंग में. वो तो उसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ है और चार्जशीट किया है, कोर्ट में आ गया, और बहुत सारे केस अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. FIR पुलिस कोशिश कर रहा है कहाँ से आ रहा है पकड़ने का कोशिश कर रहा है. बहुत सारे केसेस भी है. तो मान तो देखिए, तो अगर 10 क्या 20,000 होंगे फिर केसेस. और मुझे ये भी बताया गया कि देयर अबाउट 1 लाख. पर ऑफिशियल फिगर तो हमेशा कम होता है, अनऑफिशियल फिगर जो है अबाउट 1 लाख पीपल हु आर hooked in drug. It's a big challenge.
अभी एज ऑन टुडे JNK में हमारा 12,954 डोमेस्टिक वायलेंस केसेस पेंडिंग है. I mean, these are very, kind of worrying trends we have to realize, because how do we progress? First of all, we have to understand and accept, acknowledge the challenges before us. हमारा क्या problem है? Then हम लोग उस challenge को, problem को हल करने का हम सोच सकते हैं. So these are big challenges before us, and here the youngsters have to always be the most important. I am very happy that ये जो NGO है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं to mobilize the young people, make them understand, and also to make other rest of the people understand the various problems. इसमें I am also very happy that यहाँ पे legal service authority हमारे इसके साथ कोलाबरेट करके ये फंक्शन कर रहे हैं. एंड लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, ये जो है सिर्फ कोर्ट का मुकदमा के लिए नहीं है. इट इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस. हमें पता ही नहीं हमारा हक क्या है. बुजुर्ग का, ओल्ड एल्डर पीपल का क्या हक है, वी डोंट नो. वीमेन का क्या हक है, चिल्ड्रन का क्या हक है. ये सब ये अवेयरनेस जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अनलेस यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ, your own rights, your own responsibilities, your own duties, how do we contribute in the society? तो इसके लिए then what do you say when the awareness, एक structure होना चाहिए ना. आप जैसे you are all, I understand you are very religious, आप पढ़ते हैं religious book very religiously पढ़ते हैं. That's how you try to lead your life as a ideal life in the society. Similarly लीगल भी एक जो आइन जो है इसको भी जानना भी जरूरी है. तो क्या जानेंगे? व्हाट इज दैट व्हिच आर ट्राइंग टू लर्न? इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हिच इज द फ्रेमवर्क, द बेसिक लीगल फ्रेमवर्क. वी मस्ट नो दैट क्या है, व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये बहुत जरूरी है. पहले बिफोर इट वाज देयर वाज एब्रोगेशन. जम्मू कश्मीर का भी कॉन्स्टिट्यूशन था, बट मैंने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स of this constitution are more or less same, especially fundamental rights हैं आपके, then duties जो है, then how the state structure कैसे करेंगे, बहुत similar है. So there is not much of a difference. So we must know what is the legal framework. उसके because of which इसके लिए बहुत जरूरी है to relate our activities with this legal service authority, where we have lawyers. We have seen some of the very wonderful lawyers, especially from the girl lawyers, lady lawyers also. They are doing wonderful work. I know, in fact, मुझे बताया कि नीलोफर जी आए थे मिलने, the first president of the bar, lady president of the bar. But I think not only in Kashmir, perhaps in India also. I have not heard also. Maybe in the world also. Because मैंने कभी सुना नहीं है किसी में कि दिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ द बार ऑफ सो एंड सो, कि कोई स्टेट में मैंने कभी देखा नहीं है. इनफैक्ट आई ऑलवेज से हमारा बार काउंसिल में मीटिंग रहता है. बार काउंसिल मीटिंग में मेंबर्स यू आर 50% ऑलमोस्ट नाउ, काफ़ी आ रहा है. मे बी 20% ऑफ द लॉयर्स आर फीमेल, लेडी लॉयर्स. कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है. एनुअल कॉन्फ्रेंस जो गुवाहाटी कैसे